वेलकम टू अम्मूस किचन। आज हम लोग चिकन टिक्का बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए चलो देखते हैं एक बार। गरम मसाला, तेल, चिकन मसाला, ब्लैक पेपर, लाइम जूस, दही, सॉल्ट, कसूरी मेथी, वाइट पेपर, चिकन, मलाई, फूड कलर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर, चिली मिंट, चिकन, कोयला। सबसे पहले मिर्ची, कोतमीर और पुदीना का पेस्ट बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग ग्रीन टिक्का बना रहे हैं। उसके लिए चिकन में ग्रीन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, लाइम जूस, दही, मलाई, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर, गरम मसाला। रेड टिक्का बनाने के लिए ग्रीन पेस्ट, चिकन मसाला, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, दही, मलाई, कसूरी मेथी एंड लाइम। व्हाइट टिक्का बनाने के लिए दही, व्हाइट पेपर, मलाई, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, लाइम एंड कसूरी मेथी। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके 2 घंटों के लिए ढककर फ्रिज में या रूम टेम्परेचर में मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। दो घंटे के बाद तीनों में थोड़ा ऑयल डालकर मिक्स कर लीजिए। मैंने इन बैम्बू स्टिक्स को रात भर पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया था। अब इन तीनों टिक्कों को अलग अलग करके धीमे आंच पे अच्छे से कुक कर लीजिए।
होटल स्टाइल स्मोक टेस्ट के लिए गरम चारकोल के ऊपर घी डालकर 10 मिनट कवर करके रख दीजिए। If you like this recipe, please share, like and subscribe. Thank you.